I'm sorry, because but we would like to hear your words of wisdom. So that's why we will not leave you before you do that. Many thanks, because today is not only World Environment Day, but also Eid. So I have a commitment to go across Yamuna for an Ishtiar party. People are waiting there. This is most unexpected yesterday. But then Professor Das and I sometimes eat together here, sometimes we wander here together. So last night he said, tomorrow we have a program on Islam. I said, lucky, because it is these programs that educate me. So I know, despite of my desire, it is not read much. So I said, this is an education. I'm very thankful. And I wish I had stayed more. Now, one point before I go ahead, that everybody sitting in this hall understands Hindi, without exception, because I was attending a program environment program in Pragati Maidan. There was one person from Korea and two. Everybody understands Hindi, then I got to speak on everybody without exception. So, I was born in Bangalore, so both Hindi and English are that much foreign to me. My mother tongue is Kannada. I don't need. In fact, I was telling Professor M. K. Das. Pardon me? I was telling Professor M. K. Das before the program, should we speak in Hindi? Thank you. 300-400 लोग इकट्ठे थे प्रगति मैदान for environment day. And these are the topics they also came. वहाँ भी मैंने कहा कि मुझे बोलो, मैंने कहा पहले हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, एक बोलेगा दूसरे सुनेगा. Last year when we went to the United States, I spent some days in a place called Edison. So Edison is the place where Thomas Edison was born. वहाँ एग्जीबिशन रखा हुआ है. एडिसन बहुत कुछ इन्वेंट किया और एक चीज इन्वेंट किया, दैट वाज ग्रामोफोन. Before Edison there was no gramophone. So it's a wonderful invention. आज मैं अपने आवाज़ को प्रिजर्व करें, 10 दिन बाद फिर सुने, 25 दिन, तो सो एक्साइटिंग. तो सारा शहर उनको बुलाया, सेलिब्रेट किया. व्हाट ए ग्रेट मैन वी हैव अमंग अस. तो उसमें सब लोगों ने भाषण दिया. एडिसन ने वोट किया, ये किया, वो किया. सो मेयर ने कहा, ladies and gentlemen, I have a great honor to present to you the man who invented the talking machine. Because before that, अभी तो सबके जेब में है talking machine. तो एडिसन को कहा, आप कुछ बोलिए. तो एडिसन ने कहा, sir, I have to make an amendment. God invented the talking machine. I invented a machine which can be stopped talking. So God invented the talking machine. So, oh, talk. इसलिए मैं कहा, टॉकिंग के अलावा क्या हो सकता है. मैंने कहा, ईद का दिन है, शुभ दिन है. मैंने कहा सब मिलकर गा सकते हैं. 3-4 मिनट सीख और इंटेलिजेंस एक सब मिलकर गाएं. एक महाराष्ट्र में एक संत हो, अजीब नाम था, टुकड़ोजी करके. और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, was so much impressed by him. So he said, राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज का. बहुत अच्छा उन्होंने, because I like it because they always approach देव भक्ति देश भक्ति साथ जाना चाहिए. अप्रोच तो उनका बनाया हुआ ये मैं नौजवानों से गवाता हूँ. परसों तक तो मेरे 471 नौजवान थे उत्तराखंड में. तो हम जगह जगह जाकर गाते थे. गुड एटमॉस्फेयर. सो आई थॉट यू विल नॉट माइंड इन द मिस्ट ऑफ ऑल इमिनेंट स्पीकिंग वी विल ऑल टुगेदर सिंग वन सॉन्ग. चलेगा क्या? अगर मंजूर नहीं हो तो छोड़ देता. अच्छा छोड़िए. चलेगा. तो सबको गाना पड़ेगा. तो गाइए. सबके लिए खुला है मंदिर ये है हमारा. सबके लिए खुला है
था, मंदिर ये है हमारा, मतभेद को भुलाना, मंदिर ये है हमारा। और लोग पूछते हैं डाकू लोग के पास बंदूक था, आप उनके पास जाते तो आपके पास क्या था? मैं उनको तो मेरे पास मेरा हथियार था और ये मेरा हथियार था। और ये गाया तो डाकू बोला अरे ये तो हमारे लिए बनाया लगता है, और अपनी दोस्ती बन गई। तो इसीलिए और इनका बनाया टुकड़ों जी महाराज का बनाया। आओ सभी ही पंछी, आओ सभी ही धर्मी, आओ सभी ही पंछी, आओ सभी ही धर्मी, देशी विदेशियों का मस्जिद यह है हमारा, देशी विदेशियों का मस्जिद यह है हमारा। हो सबके लिए खुला मस्जिद यह है हमारा, सबके लिए खुला मस्जिद यह है हमारा। मानव का धर्म क्या है, मिलती है राह जिसमें, मानव का धर्म क्या है, मिलती है राह जिसमें, चाहता भला सभी का, गिर जाए है हमारा, चाहता भला सभी का, गिर जाए है हमारा। ओ सबके लिए खुला गिर जाए है हमारा, सबके लिए खुदाई गिर जाए है हमारा। संतों की उच्च वाणी, सब जन है बहन भाई, संतों की उच्च वाणी, सब जन है बहन भाई, सब देवता समाता, गुरुद्वारा ये हमारा, सब देवता समाता, गुरुद्वारा ये हमारा। ओ सबके लिए खुला गुरुद्वारा ये हमारा, सबके लिए खुला गुरुद्वारा ये हमारा। आओ सभी मिलेंगे, बैठेंगे प्रार्थना में, आओ सभी मिलेंगे, बैठेंगे प्रार्थना में, टुकड़ियां कहे अमर मंदिर है हमारा, टुकड़ियां कहे अमर मंदिर है हमारा। ओ सबके लिए खुला मंदिर है हमारा, सबके लिए खुला मंदिर है हमारा। ये प्रार्थना का ही रूप है, ये जो है गांधी इससे प्रेयर रूम ये है। मैं कैंप चलाते रहता हूँ, मेरा धंधा वही, अभी कल जाऊँगा जयपुर में कैंप कर रहा, और आई गेट young men and women from maybe 25 states, 30 states, केरला से आएगा, मणिपुर से आएगा, कश्मीर से आएगा, पंजाब से आएगा, उन सबको इकट्ठा करना ये अप्रोच है। तो ईयरली दिस इज द 35th कैंप दैट आई एम हैविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो 27 जुलाई से कैलिफोर्निया में हमारा कैंप होगा, यंग बॉयज एंड गर्ल्स का। एक फैशन है आजकल अमेरिका में, most of them wear t-shirts after t-shirt being done, and most of them have banners on the t-shirts. क्या क्या लिखा था, उल्टा पलटा तरीके के लिखा। But these days, surprisingly, one banner I see from most commonly, be the change that you would like to see in the world. Young Gandhi. So I have to start it from myself, every one of us sitting here. To change the world, start the change from here. Number one, Gandhi's guidance. And secondly, nothing is new. He said, Mother Earth had enough.
to feed every human being, to serve everybody's needs. But Mother Earth doesn't have enough to feed a single person's greed. So need and greed. Today there is so much greed and grab. So if Gandhi was to help us, नमस्कार, आइए so human beings have to start. But Gandhi's prayers, इधर आइए आइए all religious prayers, हाँ उधर पे one prayer is Isha Vatsalyan Sarvam Yatkin Kadatyam All things in the universe belong to you. It is for you to enjoy. Go ahead. Mount karo Rishi. Lekin Rishi bolta hai. How can you enjoy it best? But the best way to enjoy all it is provided by God of nature. Wo bolta hai. बोलता है the best way to enjoy is go on rejecting. छोड़ते जाओ तो मौज करोगे, चिपकते जाओगे तो दुखी रहोगे। पैसा कमाओ मना नहीं, घर बनाओ मना नहीं, मोटर गाड़ी खराब मना नहीं, लेकिन एटीट्यूड ये बने मैं इसका मालिक नहीं हूँ। तो ये बन जाए अगर इतना मालिक, then the world, you are the master of the world. तो जब ये सोचते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, सारी परेशानी वहीं से आती है। दूसरी बात, आप आचार्य विनोबा जी का जिक्र किया, उनका आश्रम है साबरमती में। गांधी जी ने पहले किया, then he moved to वर्धा. That's a long story, I don't go into that. Lekin in the same city, Wardha, there is another Paunar. Sevagram is where Gandhiji started his ashram. Paunar is where Acharya Vinoba Bhave lived. And Paunar is an ashram, Brahma Vidya Mandir. A couple of interesting things about the ashram is, it is conducted by women, one. And two, every decision has to be unanimous. If one girl says, I don't agree, you can't do that. Anyway, that's a part. तो एक लड़का फर्स्ट इन फर्स्ट आ गया नागपुर यूनिवर्सिटी, वर्धा पावना क्लोज टू नागपुर 40 माइल्स। फर्स्ट इन फर्स्ट आता है तो IAS में जाता है, बिकम सेक्रेटरी और समथिंग। लेकिन इस नौजवान ने सोचा मैं सेवा में लगाऊंगा मेरा काम। तो आश्रम के आए, वहाँ से महिलाएं, तो आश्रम से कहा कि मैं 4-5 भाई लोग हैं, मैं आश्रम में शामिल होना चाहता हूँ। अच्छा आ जाइए। वो बोले मैं फर्स्ट इन फर्स्ट हूँ नागपुर यूनिवर्सिटी का। बहुत अच्छा, क्योंकि वहाँ की महिलाएं देखने में तो लगती गाँव की, लेकिन उसमें MSc है, PhD है, सब है, बट दे लिव लाइक जस्ट villages, wearing rough cloth, hardy cloth, and doing all kinds of manual work, झाड़ू भी देंगे, पाउडर भी चलाएंगे। तो ये सोचा उनको थोड़ा इंप्रेस करूँगा, मैं फर्स्ट इन फर्स्ट हूँ और बहुत अच्छा स्वागत। तो एक दिन हो गया, नौजवान ने पूछा मुझे क्या काम देंगे आश्रम में, और मैं फर्स्ट इन फर्स्ट हूँ। तो बोले गोल्ड मेडलिस्ट। तो आश्रम की बहनों ने कहा कि हमारे यहाँ रोज़ प्रार्थना होती है सुबह शाम, उसमें कुछ भजन वजन सिखाएंगे तो हमको फ़ायदा होगा। बोले नहीं, ये तो म्यूजिक यूनिवर्सिटी अलग है, मेरा तो नागपुर यूनिवर्सिटी है, भजन वजन कर सकते नहीं, कोई और काम दीजिए। बोले एक आया फ्रेडरिक नाम का जर्मन, वहाँ आके बन गया गोपाल भाई, तहमत पहनने लगा, हिंदी बोलने लगा। वो हमारे किचन में घुसा एक दिन, अब सबसे अपने करवा एक ऐसा ओवन बना दिया, उसमें डबल रोटी बन जाती है। तो हमको इतना फ़ायदा हो गया कि अभी तो हम काम करते रहते हैं, वहाँ तो आटा डाल के जाते हैं, डबल रोटी तैयार मिल जाता है। आप कुछ किचन में मदद करेंगे तो इतने पढ़े लिखे हो। निकलने के लिए होम साइंस का मामला है, हमारा नागपुर यूनिवर्सिटी में होम साइंस का है। और तो बताने लगे और क्या क्या हो सकता है, कताई हो सकती है, रुई लेकर धागा बनेंगे, कपड़ा बनेगा। तो ये तो नागपुर यूनिवर्सिटी का काम नहीं है।
फिर वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, फार्मिंग से क्या लेना देना है गोल्ड मेडलिस्ट को। तो बोलते गए फिर थक गई मैंने, बोले भाई अब आप ही बोलो, आप क्या कर सकते हो। वो बोले कि मैं इकोनॉमिक्स में फर्स्ट हूँ, रोज़ाना आपको 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ। वो है आश्रम से ब्रह्मविद्या पढ़ते, लेकिन अभी है मजाकिया लोग। तो एक ने कहा भाई जिस इकोनॉमिक्स को पढ़ के आप इतने निकम्मे बने हो, न तो आपका काम किचन में, न तो आपका काम रेल हार में, न तो आपका काम खेती में, ऐसा इकोनॉमिक्स को हम क्यों पढ़ाते हैं। तो गुस्सा आया उनके को, मैं फर्स्ट के आया हूँ मजाक करते हैं। लेकिन 6 महीने बाद वो मुझे बोला, मैं मोटी किताबें पढ़ाता इकोनॉमिक्स, लेकिन मेरा शिक्षण पवनार आश्रम में आया तब शुरू हुआ। So 3 R's for education. I'm happy to make this is all education. So 3 R's for the concept: reading, writing, arithmetic. And Gandhiji said, I am no educationist. So he invited education specialists. Dr. Aryan Ayakam, Sri Lanka said, Dr. Zakir Hussain, one of the most eminent learned persons in India, Dr. Kumarappa, who resigned his job in America, ऐसे लोगों को बैठा है। उन्होंने कहा कि यू कंपोज एजुकेशन फॉर इंडियन सिचुएशन। तो 3 R's थे, उन्होंने एक डायमेंशन दिया 3H। What are the 3H? Number 1 H is education must be available for the hands. जब खेती करता है और do some constructive work, the hand gets education. आज hand को education नहीं है, इसलिए पत्थर मारता है। So hand must be involved in constructive activities. The second head is the H is the head. Head का education तो हो जाता है, आज के वैसे सिस्टम में भी हो जाता है थोड़ा, लेकिन head is the second head. The third one and more important is the heart. We don't have much education for the heart in our universities. And when do you get this heart education? Chambal Ghati में, आदिवासी क्षेत्र में, I had 700 boys and girls from all over Madhya Pradesh. पहले दिन उनको मैंने कहा, you just go around, और यहाँ के जो रहते हैं आदिवासी मिल के आओ, कोई एजेंडा नहीं, जस्ट मीट देम, मेक फ्रेंड्स विद देम, कम बैक। तो वो सब रहा है 2-3 घंटे के बाद। मैंने क्या दे, एक बोला भाई जी मैं जिस घर में गया वहाँ तो ऊपर छत ही नहीं था, बारिश में क्या करते होंगे। दूसरा बोला भाई जी मैं एक घर में गया था, वहाँ तो दिन के लिए थोड़ा जवार रखा था और रात के लिए कुछ है नहीं, पता नहीं क्या खाते हैं। तो ऐसे रिपोर्ट्स हैं। एंड आई आस्क्ड देम, इन लोगों के लिए सेवा करने के लिए तैयार हो? सर्टेनली, क्योंकि मोटिवेशन, अच्छा खाना खिलाओ और एरोप्लेन का किराया दे दो, एक तरह का मोटिवेशन दे। दूसरा मोटिवेशन है व्हेन द हार्ट गेट्स एजुकेटेड, he sees suffering and then that educates the heart. And we have so much suffering in India. But how many of our young people have occasion to share this suffering? तो लंबी कहानी गुनाह वाली उसमें जाता नहीं, लेकिन it's all the story of the training to the heart. So many poor people, why should there be so much fighting? Why should there be so much violence? Sustainable development में can we eliminate violence? It's a big challenge to us. And how do we eliminate violence? When the biggest violence ended in 1945, the Second World War ended, and the 3 winners, Roosevelt of the United States, Stalin of the Soviet Union, and Churchill of the UK, sat together. Unne kaha, now we have Hitler is dead, Japan is defeated, now we are on a march towards a world without wars. I was 16, 17 years then, I was so impressed.
the world is going to become warless world. It's beautiful. So no, they made so many arguments because one prevalent concept in those days was mere absence of war is no peace. Then what is peace? Peace is coming together, working together, doing things common. So then they had so many organizations. जिसने UNESCO का reference किया. So UNESCO has a beautiful sentence in its charter, and that is, it says, war begins in the minds of men, and hence the defense of peace must be constructed in the minds of men. लंका में लड़ाई शुरू नहीं होती, रावण के दिमाग में होती है. कुरुक्षेत्र में नहीं होती है, दुर्योधन के दिमाग में होती है. यूरोप में नहीं होती है, हिटलर के दिमाग में होती है. तो इसीलिए पीस चाहिए तो मनुष्य का दिमाग में पीस बैठना चाहिए. उसका ऑकेशन कैसा बने. So that's where Gandhi has helped the world, and so the world has accepted him. Make the mind peaceful. So for all kinds of sustainability, the human being must be sustained himself. And then he can think of sustenance of materials and forest and all details will go. And that is the problem. So this is what I told the Chambal people. बंदूक लेके जा रहे बड़े बड़े मुल्क वाले, they were all in police uniforms. और जब गया 1952 में, पेपर्स वर सो फुल, खूंखार, खतरनाक, क्या क्या. And I had occasion to meet some of them, Mansin ka गिरोह. He said, there are human beings like me. Slowly relations were built. So Chambal Gandhi taught me one lesson. And that is, 50,000 years ago, the tiger ate other animals. 2019, tiger eats other animals. 50,000 years ago, they say, there were cannibals, man eating man. Because man ate animals. And if all the animals are exhausted, they will eat. Darwin was the surviving the fittest. If you are not fit, you will be eaten away. But today I go to America, I go to Germany, I go to France, I go to England. Young men and women, generations and generations they were meat eating. And today young men and women, I see they are vegans. Not only are they vegetarian, but they don't eat milk, no buttermilk, no butter, no cheese. Man can change. A tiger was not given that kind of a system where the tiger would think. But human beings have the capacity to think, to imagine, and to construct. So man said, 50,000 years ago, I did not know how to cultivate. But I have got this great skill now. I can cultivate wheat, I can create paddy, I can create mango, I can create flower. Why should I eat other animals? So man can change. I saw the worst of criminals can not only change to be human beings, they can become saints. I don't say 100% it happened there, but then many of them did change themselves to be saints. They feel like worshipping them. The possibility है in human species. So that is the future for mankind. How can we have human beings all good nature, and it is possible that bad man can become a good man. And we all worship Professor Albert Einstein, the great scientist. And Einstein ने होता तो शायद चंद्रमा पर आदमी नहीं जाता है. So Einstein was naturally proud of his science. क्या अचीवमेंट है मेरा साइंस का. तो टेलीविजन आ गया, जेब में टेलीफोन आ गया, सारा तो वही. लेकिन health science, many friends were talking about health. जब जयप्रकाश जी
Chandigarh से, he became ill and he went to Bombay via Delhi. In Delhi he came, we thought that Prakash is gone. So weak and so ill, so frail. But next week I go to Bombay, Yeshwak Hospital. The Prakash is smiling, signs. जो किडनी करना था वो डायलिसिस कर रहा है, सारा खून जा रहा है, शुद्ध होकर आ रहा है. So he is no man. So almost dying people, science can bring them into life. लेकिन आइंस्टाइन ने एक बहुत मजेदार बात कही, which people, I mean the message must go to the people. मेरा साइंस है, बुरे से बुरी बीमारी ठीक हो जाएगा. सूरत में प्लेग हो गया, 15 दिन में कंट्रोल हो गया, तो वर्ल्ड हेल्थ सेक्रेटरी जनरल के ऑल द वे टू कांग्रेचुलेट इंडियन डॉक्टर्स. 15 दिन में आपने प्लेग कंट्रोल कर दिया. तो हैविंग सेड दिस, आइंस्टाइन बोले बुरे से बुरे क्रॉनिक बीमारियों को मेरा साइंस एक इंजेक्शन दिया ठीक हो जाएगा. उसके बाद बोलते हैं लेकिन साइंस के पास कोई इंजेक्शन नहीं, भविष्य में होने की उम्मीद नहीं, जिसको लगाने से एक बेईमान आदमी ईमानदार. क्या मजा आ जाता है, ऐसे इंजेक्शन हो जाता, पार्लियामेंट में भेज देते, एक एक असेंबली में भेज देते, सबको एक एक इंजेक्शन लगाओ, सब ईमानदार. तो नॉट विवेकानंद, इट्स नॉट गांधी. प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन सेज एट दैट पॉइंट साइंस कैन हेल्प यू. गर्मी लग रही है, पंखा लग गया, अंधेरा हो गया, लाइट लग गया, सारा साइंस का अचीवमेंट है, मिराकल्स. लेकिन बोलते हैं इफ यू वांट टू मार्च फर्दर, man can want to go further. At that point, spirituality will have to take over. And unfortunately in India, spirituality also has all kinds of interpretation. मुझे कैंप करना पड़ा कंदम और उड़ीसा में, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग 1000 लोगों को मार डाला, घरों को जला दिया. तो जहाँ श्रीलंका में चर्चेस को बांध मार करते हैं, वो लोग सोचते थे मैं स्पिरिचुअल काम कर रहा हूँ क्योंकि ईसाइयों को मार रहा हूँ. तो ये जो है, एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, तो ये लोगों को ले जाना है. स्वामी विवेकानंद के पास एक ग्रुप ऑफ पीपल के बड़ा नाम हो गया था, तो कलकत्ता में मिलने आए. उन्होंने कहा स्पिरिचुअलिटी का हमको मार्गदर्शन दो. तो स्वामी जी पूछने कहाँ से आए, मैंने कहा हम पंजाब से आए, हमारे वहाँ भजन पार्टी है, हम आपसे मार्गदर्शन के लिए आए. तो इमीडिएटली विवेकानंद पूछते हैं अरे पंजाब से आए, मैंने सुना 3 साल से पंजाब में बारिश नहीं हुई, क्या हाल है. कहाँ स्वामी जी बारिश नहीं है, लेकिन हम तो आए हैं स्पिरिचुअल मार्गदर्शन के लिए. फिर स्वामी जी पूछते हैं अरे बारिश नहीं आए तो किसानों का हाथ खराब हो रहा है. हाँ स्वामी जी किसानों की समस्या है, लेकिन हम आए स्पिरिचुअलिटी मार्गदर्शन. फिर करके गाय भी मर रहे होंगी प्यासे, पानी नहीं होगा, उसमें भागना नजर नहीं था. तो हाँ स्वामी जी गाय भी मर रहे, लेकिन हमारी स्पिरिचुअलिटी. वो बार बार स्वामी जी पूछे कि जानवर कैसा है, खेती कैसा है, किसान कैसा है, वो कहेंगे स्पिरिचुअलिटी. बिकॉज revolutionary that you are, she came out with this statement. So long as even a dog is hungry in my country, my spirituality demands I must find food for the dog. एक कुत्ता भी भूखा है, कुत्ते को खाना लाना मेरा आध्यात्म है. तो ये भारत में पूरी दुनिया में जरूरत है. हम लोग मंदिर में जाएं मना नहीं है, गंगा जी में नहाओ मना नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन बोलता है 30 crores of Indians have no 2 meals a day. तो हमारा स्पिरिचुअलिटी क्या होना चाहिए. तो हमारे डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये देखना पड़ेगा. 1, वायलेंस फ्री इंडिया होना चाहिए, डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए. 2, हंगर फ्री इंडिया होना चाहिए. एंड 3, बिकॉज आई वर्क विद 20 पीपल, नशा मुक्त भारत होना चाहिए. इतना शराब, और मैं कैंप किया मैंने पटना में, घूमा गली गली में, एक शराब की दुकान नहीं देखी तो बहुत अच्छा लगा. दिल्ली पहुंचता हूँ, रेलवे स्टेशन से बाहर आता हूँ दिल्ली, फॉरेन लिखकर स्वदेशी लिखकर रहता है. तो नशा मुक्त भारत होना चाहिए. एंड वी ऑल हैव रियलाइज्ड दिस. मैं सबसे पहले गया 1957 में गया मॉस्को,
You and I are respected only because you were born in India. इतना आदर मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया में एक मान्यता हो गई, भारत माने बेईमानों का देश। एक आदमी पैसा खा के लंदन जाके बैठता है, मैं और आप बदनाम। सो ये करप्शन मुक्त भारत होना चाहिए। So this sustainability must be such a kind of India and then of course it is spread into the world. And then where does it start? It starts from me. How can I begin and how can I contribute? ये आपसे तो सोचना चाहिए। तो आज भी होने के बाद चार जाना जमना पार रह गया ना, इसलिए माफ़ी मांगता हूँ। बहुत बहुत I feel very honored among such eminent people। मुझे कहा कि करने के लिए और बहुत अच्छी किताब, बहुत बहुत बधाई। भी आपको कंग्रेचुलेट करते हैं, आपको और आपके टीम को भी बहुत बधाई देते हैं। इतना सुंदर काम सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आपका अमूल्य समय दिया, हम लोग बहुत धन्यवाद।